I got selection mail earlier. I was choosing कि यार तीन मेरे पास internship है, तीन में से किस में जाना है. We were at our peak were making around 7 to 8 lakh rupees a month from our software consulting ओह। business. If you think about फैंग के अलावा भी वो बहुत बड़ी जगह में है. Like फैंग से ज्यादा पैसे HFT देती है. मेरे पास इनमें 100 रेज्यूमे आते हैं. आई एम अ बिट अगेंस्ट ऑफ ATS वगैरह. आई रिप्लाई टू ऑलमोस्ट एवरी मैसेज पर्सनली. मैंने सीधा कॉल लगाया कि यार ये जॉब है. मैं जॉब पोस्टिंग में नहीं डाल रहा. तेरे को इंटरेस्ट है तो बता. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेक इनसाइट्स। सो गाइज, आई नो कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू माई एंड, बट नाउ आई ट्राई टू पोस्ट द कंटेंट रेगुलरली। सो आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम स्टार्टअप एंड कॉर्पोरेट लाइफ दोनों से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी हैव निवेदित विद अस ऑन आवर शो। हाय निवेदित, हाउ आर यू? हेलो गौरव, आई एम गुड. आप बताइए. बस एकदम बढ़िया। तो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। श्योर श्योर. सो यार, हाउ शुड आई से, आफ्टर लाइक 2018 I gave my JEE mains in advance. That's the point from which I want to start. And after advance, I actually started my first a small venture. So what we used to do is we used to solve specifically mathematics and physics doubts for our juniors in a WhatsApp group, which was paid around 10 rupees a day. ओके। So that was the first small gig which I did. But उसके बाद क्या, we earned some money out of it, not much, 2000 3000 something. But it was more of like यार जेई हो गया है, अब क्या करें, एक रिजल्ट का वेट कर एग्जैक्ट। रहे हैं. So that was the first thing. And at that time only I majorly started exploring entrepreneurship and stuff. There was a very great author Rashmi Bansal. उनकी दो बुक्स थी जिससे आई स्टार्टेड. One was Stay Hungry, Stay Foolish, and one was Connect the Dots. So these two books were the first introduction to entrepreneurship for me. And yeah, so each book had 25 stories of people who have built some ventures. So around 50 stories that was a set. I got that from some local bookstore, and yeah, I kind of got hooked around it. So these two books se pura start hua. But when I started college, I was sure that either I wanted to do research or I don't want to do entrepreneurship. So yeah, मेरा major inclination was towards research only. Even I was hesitant to join IIT before that. मेरा थोड़ा सा ये था कि probably I should try for IASC or ISI, but as ऑल luck राइट। had मतलब आईआईटी से पहले भी आपका रिसर्च का ही था? कॉलेज स्टार्ट yes. होने से नहीं है, पहले से भी वही था आपका? Yes. So पहले से I was trying for IASC और ISI. ISI में हुआ भी मेरा, फाइनल इंटरव्यू राउंड तक हो गया था. बट इट वाज समथिंग कि यार जेई एडवांस की डेट से क्लैश हो रहा था, या फिर देयर वाज सम इशू, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था. आई वाज अमंग टॉप ओके। 100 इन इंडिया इन द रिटन टेस्ट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. देन या ISI बैंगलोर. देन मतलब विद इन कॉलेज आई वाज लाइक ठीक है, रिसर्च पे स्टार्ट करते हैं. एग्जैक्ट। And the greatest thing which happened for me in first year was there were few great seniors. Specifically, my fourth year when I was in first year and my third year, there were ओके। few like if I name the few, there was Divij from my third year, there was Vishesh from my fourth year in my college only. Means because of these two seniors, I got some guidance कि research में कैसे enter करते हैं, क्या system होता है थोड़ा बहुत ओके। in first year initially days. Then I built on that. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इन लोगों ने बोली थी वो थी सीजीपीए मेंटेन करना फर्स्ट ईयर में. ओके। सो माय सीजीपीए वाज अबव 9.7 something in my first year, which was like due to which I got an internship at IIT Ropar in uh, under Dr. Aarti Pandey in data structures and algorithms only. ओके। वहां से That was फिर? a research हम्म। intern, data structures and algorithm, theoretical computer science, time complexity and stuff like that. Then a part of my research work there was later published in a paper, which was an algorithm to detect the bike leaks, maximum bike leaks within a bipartite graph, and that was published
in IIT Hyderabad आईआईटी in in, हैदराबाद, ऑलराइट। in Canada. Then this was in my second year. I was in Hyderabad and तब चाइना में कोविड डिटेक्ट हुआ था. I was at airport, हम्म। हैदराबाद एयरपोर्ट, coming back to of college. And उस टाइम काफी enjoy भी किया था because college used to pay for this research trips. So पूरा flight ticket, एग्जैक्टली। stay, पूरा everything was paid by college. It was काफी मस्त एक्सपीरियंस। it was, yeah. Then anyway, uh, I got actually a lot of research interns after it. Okay. I applied to some universities in Canada, some in Bombay, some in other parts of the world. But क्या हुआ? I got selection mails earlier. I was choosing कि यार तीन मेरे पास internship है, तीन में से किस में जाना है. ओके। But एग्जैक्टली। it was in second year. But एकदम से आता है कोविड एंड फिर हम्म। दोनों तीनों का साथ में मेल आता है इंटर्नशिप इज कैंसिल ड्यू ओ। टू कोविड. ये आप कनाडा नहीं आ पाएंगे, आप ये नहीं आ पाएंगे और वट एवर. सारी एक साथ कैंसिल हो गई. ओ। देन आई ट्राइड एक और इंटर्नशिप, रिमोट इंटर्नशिप that was under a professor at IIT Mandi. There they were working on deep learning intern, right? But for some reason मेरा deep learning में उतना interest नहीं आया उस time. So I dropped that internship in like 2 to 3 days only कि भाई इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, right? ओके। Then I was like कोविड है, कुछ नहीं है करने को, रिसर्च में समझ नहीं आ रहा, entrepreneurship करके ट्राई कर लेते. So we started our first venture, that was engineering times. We wanted to be an edtech for engineers. We used to teach DSA, Python, and other stuff online. Our courses were only 250 rupees something at that time, and we were doing crazy sales. हमने बहुत अच्छा बेचा, बहुत अच्छे लोगों को पढ़ाया, काफी अच्छा चल रहा था. But there और was ये some, ये आप कौन से sorry, ईयर की बता रहे हैं, ये 2020? सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का स्टार्ट का है. ऑलराइट, मतलब 2021 के आसपास। 2022, 2020, सॉरी, 2020, हाँ 2020 का है, 2020 का है, ओके। जब कोविड नया नया आया था. नया नया आया था, एग्जैक्टली। ठीक है। देन तब एडटेक भी बूम में था. हाँ, तब तो बहुत ज्यादा एकदम So जंप we आया था। we did that. We did workshops. हम इंटरव्यू प्रेपर ये सब की वर्कशॉप करवाते थे. हम एथिकल हैकिंग के ऑनलाइन सेशंस और ये सब ओ। करवाते थे. So what happened in that workshop? We made 15,000 rupees in a day for a third year starting student. So it was like यार ओ, बढ़िया चल रहा है. बढ़िया, दिन हाँ। का 15-20 हजार रुपये बन रहा है. It was nice, हम्म। but we were not able to manage it really well with our colleges and stuff. ओ। Then we started with this thing called Menu Hub. What we were trying to do is कोविड में कोई भी रेस्टोरेंट मेनू नहीं रखता था. हाँ, एग्जैक्टली। सब लोग क्यूआर कोड स्कैन करते थे. तो एग्जैक्टली। हमने उसका एक SaaS सोल्यूशन बनाया ओके। और हमने तो उसमें बहुत सारी एआई एनालिटिक्स, बहुत सारी चीजें डालने की कोशिश करी. दिस वाज इन आवर थर्ड ईयर, like second sem, like after fifth sem. So but ये सब बनाना was expensive and we needed money obviously. एग्जैक्टली, वो तो चाहिए। So what we did is we started doing software consulting. ओ। We used to make softwares for people and stuff like that. And software consulting business actually did fly. We were at our peak when we making around 7 to 8 lakh rupees a month from our software consulting ओ। business. But that 7 to 8 lakh I said was revenue, not profit. So anyway, uh, तो that was a मतलब, good money. तो एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट में एग्जैक्टली आपका क्या रोल रहता था, क्या करते थे आप? We used to make software for companies. ओके। ऑलराइट। That money was pretty actually good for someone in fourth year, हम्म। right? Third बहुत year, सही। fourth year of the college. It's like यार बढ़िया है ना. एंड एकदम सही। उस मनी के चक्कर में अपना प्रोडक्ट बैक लाइन में जाता गया. इस पे हमने बहुत पैसा, बहुत टाइम और बहुत इन्वेस्ट करता हम्म। गया क्योंकि मनी वहां से आ रहा था एंड प्रोडक्ट ये था. सो वी आ, काइंड ऑफ डिड दिस. बट अपना बिजनेस बहुत ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो गया. इतना ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो गया कि
There were there were clients we were saying no to also, but the issue was कि we didn't have good processes within our company. We didn't have um, people handling various things. Everything was me and my partner Sahil, which were majorly flowing through both of us. And उस टाइम मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर था फ्रॉम माय कॉलेज, एंड मेरे जो पार्टनर था उसके पास दूसरी कंपनी से ऑफर था. सो वी डिसाइडेड कि फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ यस नो आई डिसाइडेड माइक्रोसॉफ्ट का लास्ट टाइम जो भी था उससे 2 मिनट पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आई एक्सेप्टेड. ठीक है. एक्सेप्ट किया था। ऑल राइट। तो फिर जब हम्म, या तो फिर जब माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेप्ट करा था ऑफर, तो वहां पे मतलब क्या रोल था आपका माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट में में? आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर. किस चीज पर मतलब हैंडल करते थे? यार exact product I would not like to disclose, but it ओके। was more about various things in Azure. एज्योर उसका एआई वर्जन होता है एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का? Azure is a cloud. ओके। ऑल Yeah, so राइट। there are various things in Azure which I have worked on. ऑल राइट, तो मतलब वहां पर आपने जितने टाइम काम किया है, इसी पर आपने काम करा था? Yeah, majorly Azure की various services. ऑल राइट। सो मतलब ये आपके ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट, कि आपने ऑफ कैंपस करा था? मेरा ऑन कैंपस. ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑल राइट। सो जैसे अभी हम थोड़ा कॉर्पोरेट से रिलेटेड में पूछता हूँ कि जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये मतलब फैंग कंपनीज रहता है टारगेट। वो हम्म. शुरुआत से मतलब उनके दिमाग में फैंग ही रहता है, और कोई कंपनीज वगैरह वो इतना सोचते नहीं है। सो अगर कोई स्टूडेंट जैसे फैंग कंपनीज वगैरह के लिए प्रिपेयर आउट कर रहा है, तो कौन सी चीज़ों पर उन्हें मेन फोकस रखना चाहिए अपना? एज अग हम्म। मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ पे अगेन अलग है. ओके। फैन कंपनी टारगेट करना, आई डोंट नो हाउ राइट इट इज. ठीक है. essentially by thinking majorly people are thinking while they target fan is they are chasing those lifestyle. एग्जैक्टली। है वो ना तो सही है क्योंकि कि वो अच्छा पैसा अच्छी जॉब है ना. जॉब तो एग्जैक्टली। इफ यू थिंक अबाउट फैंग के अलावा भी वो बहुत बड़ी जगह में है. लाइक फैंग से ज्यादा पैसे एचएफटी देती है. हम्म। HFT, HF, there are a lot of companies who pay good, not even comparable to Fang. There are startups also who are starting to pay good. There are US based companies also. So I say Fang target नहीं होना चाहिए. Target होना चाहिए भाई skills अच्छी करो. Be a good software engineer. Be a good ओके। skilled person. Good problem solver. Then I think Fang Wang अपने आप हो जाएगा. ऑल राइट। आज अब जैसे एक टर्म भी काफी ज्यादा चल रही है, डाइवर्सिटी हायरिंग कर रही है हर कंपनी। सो उस हम्म. चीज पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वेदर आपके हिसाब से क्या है, सही है गलत है, क्या है आपके हिसाब से? So yeah, regarding diversity hiring, there are two perspective. One एक तो student perspective है, one company perspective है. एग्जैक्टली। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आई अंडरस्टैंड क्यों अनफेयर है, क्यों क्या है. एंड ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ जोक्स एंड स्टफ जो होते हैं, एंड देयर आर पीपल कमेंट अ लॉट अबाउट इट. ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, दैट इज फेयर. फेयर, टोटली अंडरस्टैंडेबल. बट कंपनीज का क्या पर्सपेक्टिव है, दैट इज समथिंग विच आई एम नॉट येट एबल टू अंडरस्टैंड. कि यार why they are doing, if they are doing this such thing there must be some perspective. टू अ पॉइंट डाइवर्सिटी हायरिंग समझ आता है मेरे को, बट जितना मैं, अगेन आई डोंट हैव डेटा, बट शायद डाइवर्सिटी हायरिंग जितना मैं अपने जूनियर से सुनता हूँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है. बहुत आई एम ज्यादा। नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर अबाउट डेटा पॉइंट्स और एनीथिंग, बट बिफोर कमेंटिंग कि क्या है कैसा है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट कंपनीज का पर्सपेक्टिव जिसका मेरे पास अभी डेटा नहीं है. एग्जैक्टली कॉज क्योंकि हमारे कॉलेज में और जिन स्टूडेंट से मेरी बात भी होती है इनफैक्ट, तो वो भी कहते हैं कि उनके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में भी काफी ज्यादा हायरिंग रहती है। हम्म. मतलब कभी कभार दे डोंट से कि डाइवर्सिटी हायरिंग है, दे जस्ट कम इन द कॉलेज एंड देन वो प्लेस करते हैं। लेकिन उसमें वो ऑलरेडी वो अपने पर्सपेक्टिव वैसे ही लेकर चलते हैं माइंडसेट में। सो हम्म. जो वो स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं उसमें वो रेशियो बहुत कम हो जाता है, जो बॉयज का रेशियो रहता है। सो ये काफी ज्यादा मतलब चल रहा है आज के टाइम पर ना। लिंक्डइन पर एवरीडे मैं देखता हूँ कोई ना कोई पोस्ट ही आता रहता है उसी से रिलेटेड। नहीं नहीं, I have seen that. I have seen that. I have heard that. My brother is also doing engineering right now in ओके। final year, so I have seen that. But um, मैं पूरा पर्सपेक्टिव समझ रहा हूँ उस चीज़ का, बट आई डोंट नो येट कंपनीज का पर्सपेक्टिव क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो चीज़ को. इफ आई वुड लाइक टू लर्न एंड नो मोर अबाउट इट,
then probably I would be better able to comment ki what is my view. तो जिस टाइम पर मतलब आप थर्ड और फोर्थ ईयर में थे उस टाइम पर था इतना डाइवर्सिटी हायरिंग का? There was on my for my seniors also, but कितना percentage था that I don't know. See, हमारा year was a different year. 2022, एग्जैक्टली. ओके. 2021, 22 was a zero interest rate year. Every company was hiring here and there. एग्जैक्टली. So I don't know about the ratio and stuff, but हो सकता है बढ़ गया हो. I'm not aware. ऑलराइट. सो आप जैसे थोड़ा सा कुछ रिज्यूमे रिलेटेड टिप्स बताएंगे अपने हिसाब से, जो आपको लगती हो. काफी टाइम आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, स्टार्टअप्स पर काम किया है, सो आप थोड़ा उस हिसाब से बताएंगे. So yeah, abhi we have started my new company, which I've just started. I'm not able to do full time yet due to some health related things, but yes, I have started a full time on my new company. And this new company का aim ही है to connect people with jobs. ओके. So अभी daily on the daily के उस पे I receive around 100 plus resume daily in my inboxes over email, ओके. WhatsApp, LinkedIn, and we are already working with around 8 companies to help them hire. ओके. 8 कंपनीज के साथ. Around 8 के साथ we have collaborated within a month, but we are looking for more. But the whole point is what I am trying to say. मेरे पास दिन में 100 resume आते हैं. I am a bit against of ATS वगैरह. I reply to almost every message personally. So ओके. मेरा केस different है. But when as a human I am looking at a resume ना, I want one thing in your resume to stand out. ओके. कि किसने जी सॉब किया है, किसी ने एसीएम आईसीबीसी का अच्छी रैंक लिखी है, किसी ने कोई बहुत ही कूल प्रोजेक्ट बनाया है. ठीक है, मतलब देयर शुड बी समथिंग व्हिच यार से कि दिस पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन. एग्जैक्टली, क्राउड से अलग कर दे उस पर्सन को थोड़ा. हाँ, देन आई पीक इंटरेस्ट इन दैट रेज्यूमे, देन आई गो हेड एंड गिव हिम अ फोन कॉल कि यार अच्छा लग रहा है, मेरा क्लाइंट इस टाइप से हायर कर रहा है, तुम बताओ तुमने क्या क्या काम किया. ऑन द फोन कॉल देन आई डिसाइड कि कैसे करना है. But yes, this is something which I would suggest. And regarding resume format, I have a strict problem with Word resume. Please do not send me, or I don't know about other recruiters, but doc form में resume मत भेजो यार. Send ओके. PDF. Doc form के resume skip हो जाते हैं due to the simple reason कि phone में सही से नहीं खुलता. I हम्म. usually do on my phone, right? हो जाता है. Please doc form में resume avoid. एग्जैक्टली. There are no as special things. And one more thing is which we have observed. Please stay honest in your resume. अब मैंने ये देखा है कि लोग आजकल कॉलेज का डिग्री का ईयर गलत लिख देते हैं, अब कुछ कंपनीज का एक्सपीरियंस गलत लिख देते हैं, फिर वो बाद में जब हम फाइनल राउंड में पहुंचते हैं ना तो हमें रिजेक्ट करना पड़ता है. वो आपकी भी मेहनत बर्बाद करता है, हमारी भी बर्बाद हमारी भी करता है. मेहनत. एग्जैक्टली. So please stay honest. These are the two things. And format etc. Do any keep anything which is clear to understand. It's okay. Regarding ATS etc., I can't comment. But personally, when I see resumes, these are things which I really like. ऑलराइट. सो जब हम एक स्टार्टअप में देखते हैं, जब हम एक स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं, या फिर हम एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और वर्सेस हमें कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हैं, तो दोनों में मतलब कैसा मतलब वर्क कल्चर रहता है, क्या डिफरेंस रहता है अकॉर्डिंग टू यू? Yeah, let's take example of any big company. Let's take Microsoft. Okay, ओके. I don't know the exact number, but around 1 lakh 2 lakh लोग हैं Microsoft में. Probably, I don't know the exact number. हम्म. ओके, अप्रोक्स या रफली कर लेते हैं. चल let's take some fictitious company. ठीक, एंड उसमें 1 लाख लोग हैं. एंड देयर इज अनदर फिक्टिशियस कंपनी जिसमें 10 लोग हैं. ठीक है. एंड द पॉइंट इज अगर उस 10 लोग की कंपनी को 1 लाख वाले को बीट करना है, दिस हैज टू मूव फास्ट. एग्जैक्टली. So they want people who can take ownership on their own, who can do stuff on their own, टू. who do not shy away from hard work, long hours, right? Whereas in a big company, there is a structure, there are processes, and वो जरूरी है. वो ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है, वो बहुत जरूरी वो है. जरूरी है. एग्जैक्टली. बट वो थोड़ा सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है. वो Okay, so you have things you can slow down. You have people you can who you can go and ask for. In a startup, it's majorly यार एक
एक है हमारे पास जावा डेवलपर, वो फिगर आउट एवरीथिंग, राइट? एग्जैक्टली। तो हम्म। या मतलब थिंग्स हैपन। खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ती है हमें, एंड वहां पर यस, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, देन वो उसी को करते हैं बस। दे डोंट यस, टेक केयर मच अबाउट अदर यस। थिंग्स। And I also think one more thing. When I am hiring for my own startup, let's say, ओके। or when I have hired in before, I only try to hire people for myself who are genuinely interested in what we are doing, who I feel are genuinely interested. ओके। I don't want to hire someone ki just pay के लिए आया और चला गया. Because the point is, it's very dynamic. तुम्हें काम इतना ज्यादा करना पड़ेगा, हम्म। बहुत ज्यादा करना इतना ज्यादा पड़ेगा। चीज करनी पड़ेगी. I mean, if you are doing it on your own, that's super nice. If I am telling you to do it again and हम्म। again, or someone else is pointing or doing stuff in a startup, usually people lose their confidence. हम्म। And when ये they lose चीज their काफी बड़ा confidence, वो backfire करता है. So I बैकफायर try कर। to see people who are genuinely interested in what I am trying to do. ऑलराइट। कि जैसे एआई आज के टाइम पर काफी ज्यादा बूम कर रहा है, काफी ज्यादा क्रेज दिख रहा है, काफी इवॉल्व कर रहा है। सो वो एआई जो है स्टार्टअप एंड कॉर्पोरेट लाइफ में क्या जॉब्स वगैरह को कम कर रहा है, या फिर जो जिनको जॉब्स है उनके काम को आसान कर रहा है सिर्फ, अकॉर्डिंग टू यू? So yeah, actually I heard Bill Gates somewhere. The Probably within Microsoft also he Microsoft only he came to Hyderabad, and in that live stream I heard it, and I agree with that point, and I have that stance in my mind. AI is actually changing the form of work. For example, हम्म। um, I personally think that going through UI, say ordering, I wanted to order some medicine. Or ordering that medicine through some app and going through so many clicks and stuff is a pain. Probably बहुत simple होगा अगर मैं अपने phone को बोलूँ I need this medicine, arrange it. You have this much money. Like you say to your assistant, right? एग्जैक्ट। Now there would be definitely people needed to create this, right? हम्म। So what I'm trying to say is AI will definitely, or not just AI, any technology for that matter, when mobile came, when touchscreen came, anything, it's probably will change the form of interaction and the way and where people work. ओके। कम करेगा या ज्यादा करेगा, आई डोंट थिंक आई एम दैट विजनरी टू कमेंट राइट नाउ, बट आई थिंक पीपल विल फाइंड वे to work somewhere in some form or something else. ऑलराइट। मतलब। But definitely, it's हम्म। making a lot of jobs easier. But obviously, if jobs get easier, people do more work, they get more business and stuff. Hire more people probably. So I don't know. I could be anyway. But what I believe majorly, it will change the form of the form and the way we work. ऑलराइट। तो जैसे आप जैसे स्टार्टअप वगैरह में काम मतलब आप कर रहे हैं अपना, जैसे वेंचर कर रहे हैं, तो उसमें भी आप मतलब एआई काफी ज्यादा यूज होता है आपके में, या ठीक ठीक? Yes, so we are using AI a lot. So our products are not launched yet. We are building those. Currently, we help our clients to hire manually. We have a whole process. We help them hire manually. Now, what we are doing using AI is we are automating this whole process. We want to create an automatic recruiter for you. आपको एक companies tell कि ये we want to hire this kind of people. That recruiter automatically starts finding, searching, contacting, talking, negotiating everything. And हम्म। from candidate perspective, there's an agent of candidate also. They tell everything to that agent about them, including resume, expectation, location, everything. And these two agents talk and find a match. That's what we are trying to build बिल्कुल। eventually, but it will take a lot of time. Currently, we are in a manual model, so we have a lot of AI use cases. ऑलराइट। सो अभी तक हमने रिलेटेड टू जैसे डिफरेंस के बारे में बात कर ली, एआई के बारे में बात करी है। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि नेटवर्किंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहता है दोनों के अंदर, बीट स्टार्टअप कॉर्पोरेट दोनों के अंदर? Yeah, for a junior person in हम्म। college, if you are targeting Fang, Mang, and other stuff, right, हम्म। very large companies, I ओके। don't think that would plays a much role, to be honest. ओके।
ऑलराइट। It plays role, but in some strategic departments. For example, I know a person who was working with a professor and he did pretty good job. Now that professor referred him to some company and he got a job directly in that company ओ, without any much interviews. शायद हुए थे interviews, मेरे को याद नहीं है, हम्म, but easily हो गया. So it works, but I think probably कि जो junior level पे है उतना I don't think so. It works in large companies. ऑलराइट, मतलब जैसे In रेफरल Germany, वगैरह के लिए कहते हैं कि रेफरल्स वगैरह मिल जाते हैं एंड I don't know. I don't know, to be honest. Her company का there must be some hiring ideology, some algorithm. But frankly, I feel referral काम नहीं करता है. I feel that for junior level, in big companies. But while coming to startups and these companies, small companies, I feel they are so dynamic. See, बड़ी companies में there is a hiring process, pipeline stuff कि आपको इस process के through होगे. In एग्जैक्टली। large companies there is nothing. In small companies there is nothing. Founder को अच्छा लगा, budget है, आ सकता है ऑफिस, done. ओके, तो स्टार्टअप वगैरह में मतलब नेटवर्किंग का रोल है। I think it plays. See, अभी भी I am hiring currently for a profile. ठीक? Okay. And I know a person from he was my ex employee in my past startup. ठीक है, आई एम हायरिंग फॉर अ स्टार्टअप. आई नो अ पर्सन जो इज करेंट ही इज गुड एट इट बिकॉज ही हैज वर्क विद मी. मैंने सीधा कॉल लगाया कि यार ये जॉब है, मैं जॉब पोस्टिंग भी नहीं डाल रहा, तेरे को इंटरेस्ट है तो बता. ऑलराइट। सो इट मैटर्स इन फॉर स्टार्टअप्स एंड स्टफ. बट नेटवर्किंग आई थिंक इज नॉट अबाउट कि फाउंडर को रीच करते रहो. मतलब मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि लेट्स हैव अ चैट. ऑन व्हाट? माय क्वेश्चन इज ऑन व्हाट? ओके, एग्जैक्टली। फॉर व्हाट? It's more about, yeah, first I believe try to give something interesting, try to give something जिसमें मेरा आई भी जाए. For example, there was this person who is working with me currently. He out of nowhere send me a report कि here is where your business can go wrong. ओके, And I said दैट्स यार तू क्रेजी। ऐसा कर, तू सीधा आ जा. अच्छा, हाँ ये दैट मैंने वाज रिपोर्ट यूनिक पूरी. मतलब। हम्म। हाँ, देयर वाज समथिंग जो इंटरेस्टिंग था मेरे को पढ़ने में. एंड समथिंग वेयर ही हैज गिवन हिज यूनिक थॉट. समथिंग जो जेन्युइनली शो करता है मेरे को कि ही हैज अ इंटरेस्ट इन माय बिजनेस और स्टफ. हम्म, सो आई थिंक स्टार्टअप में नेटवर्किंग हेल्प करता है, बट इट शुड बी like a give and take relationship. If you are taking or asking for a job, give something, समथिंग एग्जैक्टली। सिर्फ लेट्स something चैट interesting, या कुछ something करने से कुछ नहीं होगा। रैंडम चैट वैट करने से इट सिर्फ कैन वर्क. मेरे पास अभी एक रैंडमली एक रेज्यूमे आया था, आई रियली लाइक्ड इट, आई हायर्ड. बट और द मतलब पॉइंट है वो डायरेक्ट रेज्यूम. जैसे जैसे आपने कहा कि डायरेक्ट सिर्फ लेट्स चैट भेज देते हैं, सो वो किसी हाँ, तरीके से मुझे नहीं लगता काम करेगा। अपना मेरे कुछ को भी रिज्यूमे या कुछ तो भेजो जिससे सामने वाले को यही कुछ है. पता लगे। एंड अगर यू इफ यू आर सेंडिंग मी रेज्यूमे, इट शुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग. जो बंदे का मैं रेज्यूमे देखा था, ही वाज अ जी सॉफ्टवेयर, ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, ही वाज फॉर रिमोट, एंड ही हैज मेड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स. आई वाज लाइक व्हाई नॉट. एग्जैक्टली। सो ऑलराइट। आई थिंक इट्स मोर अबाउट, यार स्टार्टअप में काम करता है. एंड स्टार्टअप, टू बी ऑनेस्ट, वेरी यंग स्टार्टअप्स, नॉट सीरीज बी सी में नहीं, आई एम नॉट श्योर बी सी का, बट वेरी यंग में तो मैंने देखा है काम करते हैं. बट इट शुड बी लाइक नेटवर्किंग, not like anything you are sending. It should be like, fine, I got this, then this, I want to point something or something. Right? मतलब कुछ अच्छा होना चाहिए. Or something एग्जैक्टली। interesting, something which catches my eyes. Because नहीं तो there are a lot of messages, inbox, mails, which get flooded from candidates, from a lot of companies and stuff. Definitely, I want to go ahead and reply and read each one of them, but it's not humanly possible. एग्जैक्ट। सो जैसे आपने काफी सारे स्टार्टअप्स वगैरह आप बता रहे थे, आपने वेंचर्स पे काफी काम करा है, तो एक जैसे यूज के एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना यूज एग्जांपल लेता हूँ, मुझे कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मेरे माइंड में आइडिया है वो। सो आइडिया आने के बाद आपको क्या मतलब क्या इनिशियल स्टेप्स होते हैं अगर हमें एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना है तो। Yeah, to be honest, इसका there is no one rule. There is no like an algorithm you can follow.
in my opinion, मैं गलत हो सकता हूँ. I am at a very young stage. I'm just एग्जैक्ट 25. There are people who are more experienced than me. हम्म. But मेरे को नहीं लगता कि there is one algorithm you can go ahead and try to apply it. I think it depends on your confidence. ठीक है. कई बार ओवर भी हो जाता है. But एग्जैक्ट it's more about, okay, how confident you are, how much data you can back, how much logically you can say कि ये चलेगा. Probably say you have some initial users, probably you have some customers, you're able to get something very easily, probably you have a sign up page where a lot of people have shown interest, राइट. सो कुछ अगर हमारे पास डेटा है या कुछ है टू शो कि यार ये चलेगा, तो वो हम्म. सिस्टम ऑफ थिंकिंग को लॉजिकल बनाता है. नाउ द पॉइंट इज, ये डेटा डिपेंड्स अपॉन हाउ टू कलेक्ट एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट डेटा, बेस्ड ऑन आइडिया, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन पर्सन, based on a lot of factors, right? So there's no one shot solution which I say, but I think it's okay. If you are in college, try something. It's एग्जैक्टली. completely okay. College में there is no risk. There is one very good book which I would recommend regarding this. हम्म. Actually, two books which helped me a lot in this thinking. One is the Lean Startup. This was एग्जैक्ट. actually my course book in minor of entrepreneurship at IIT Jodhpur. This books basically tells how to start or how to work in a very less resource manner and slowly improve that. I think that ideology helps. Second thing is second book is the book The Mom Test, which ओके. basically talks you to how to talk to customers and all. So ये दो books I think helps you in thinking which idea help personally me, which could work, which could not work and stuff. But again, it's more about the optimism of the CEO or the founder. एग्जैक्टली. क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आई थिंक काफी इसमें गिरता है अगर आप वैसे स्टार्ट कर रहे हो तो The लूज होने thing के is, चांसेस रहते हैं. हम्म. the thing is, even if you are not confident upon your idea as a founder, you have to show that optimism to everyone. नहीं तो तुम्हारे एग्जैक्ट. एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, तुम्हारे इन्वेस्टर्स बोलेंगे भाई तू हम्म. कॉन्फिडेंट नहीं है, तेरे को पैसा कैसे दूं तो तुम्हें. हाँ हाँ. तुम्हारे कस्टमर्स एग्जैक्ट. नहीं आएंगे कि भाई तुम ही अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, हम क्यों यूज करें. एग्जैक्ट. सो ऑल राइट. हम्म. आई फील कॉन्फिडेंस जरूरी है, एंड वो कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसे आता है वो इम्पोर्टेंट है. बट वो कॉन्फिडेंस कुछ बैकिंग के साथ होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई आज सोचा फेसबुक बना देंगे तो बना दी फेसबुक. कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ कुछ तुम्हारी लॉजिक होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. Yes. एग्जैक्टली. कुछ इंसाइट होनी चाहिए उस इंडस्ट्री के बारे में, कोई कुछ डेटा तुम्हें होना समझ में चाहिए आए. तुम्हारे पास. कि मतलब ये नहीं है कि सोचा और सीधा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया उसमें, कुछ ना कुछ सपोर्ट Before होना चाहिए. starting this my current venture, I studied this industry for 1 year. ऑल राइट. ओके. So हम्म. yeah, I ऑल don't राइट. know. Sometimes it works on the short. I know a few people जिन्होंने एकदम से start करा चल गया. But I ओके. feel कि उन्होंने back of the mind उन्होंने पहले इतना काम किया हुआ है उस इंडस्ट्री में, something their intuition उनका लीड करता है कि हाँ ये चल सकता है. एग्जैक्ट. ओके. सो अब मेरा नेक्स्ट ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा था कि आप कॉलेज के टाइम पर एक स्टार्टअप या वेंचर पे काम कर रहे थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर था तो आपने लास्ट मिनट पे एक्सेप्ट कर लिया था. सो मतलब जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का मतलब सही चल रहा था, स्टेबल जॉब, तो मतलब आपने दोबारा स्टार्टअप पर कैसे स्विच करा? क्या सोचा आपने, कैसे आपको लगा कि वहीं करना चाहिए आपको? यार सी, हर किसी, आई फील कि आई एम अ पर्सन जिसे काफी उसके गोल्स मैटर करता है. And for everyone it's a different goal, right? I'm a person who wants to make a mark, and for everyone this could be different what they want in life, right? I feel that right now कि यार मेरे को कुछ बड़ा करना है, अपना करना है और कुछ अच्छा करना है. ठीक. These are things which I can do while I am staying at Microsoft also. किसी ने मना नहीं किया. These are possible. ठीक है. ओके. But the thing is, what I thought कि यार, I felt, to be honest, हम्म. कि it's better if I go out, face the world, learn more, and expand my horizon at this age. Because in my experience, when I have run my own company, that was the best learning experience I ever had. एग्जैक्टली. तो बहुत From tech एक्सपीरियंस. to हम्म. stuff, from tech to managing people, managing finance, managing payrolls.
आपको सैलरी एक दिन डिले हो गई तो आपकी कंपनी में हंगामा हो जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू एग्जैक्टली। नीड टू टेक केयर. हम्म। टैक्स कंप्लायंस, लॉ ही इतना सारा आपको देखना पड़ता है. वट एवर. माई पॉइंट इज दैट वॉज द बेस्ट लर्निंग विच आई हैड. And I felt I need to basically grow more, learn more, and do more. So I thought, why not? Uh, it's okay to take second it. And देखते हैं कहाँ पे जाता है. एग्जैक्ट। सो स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने काफी ज्यादा स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड बात करी। सो आपकी इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है, आपसे आपसे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आपको लगता है कि काफी बड़ी मिस्टेक्स रही होंगी? वेरी गुड क्वेश्चन यार. मेरे को ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट, अभी तक जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है आई हैव लेफ्ट थिंग्स वेरी अर्ली. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वो अपना इंजीनियरिंग टाइम्स वाला भी बात करूँ, हम्म। इवन रिसर्च वाली बात हम्म। करूँ, रिसर्च में फर्स्ट ईयर में आई वॉज एबल टू डू गुड. सेकेंड ईयर में आई हैड अ गुड रिसर्च इंटर्नशिप्स ऑफ. इफ आई वाज कीप ऑन बिल्डिंग, मेरे 4 साल में आई वुड हैव बीन अ वेरी ऑसम रिसर्च प्रोफाइल, राइट. बट आई लेफ्ट दैट. देन आई बिल्ड इंजीनियरिंग टाइम्स, जो काफी अच्छा चल रहा था मॉनेटरी वैल्यू पे. हम्म। But then we have to leave it for something. Then again we build a good service company. Then I left that. Right? So मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली चीज मुझ में शायद थोड़ी गलत हुई है मुझसे. I should have stayed there for a longer time. और टाइम। उसके रिजल्ट्स अपने आप बहुत ज्यादा आने लगते हैं. जैसे मैंने बोला, मेरे को सर्विस शायद उस टाइम बंद नहीं करनी चाहिए थी, शायद कम कर देनी चाहिए थी सर्विस बिजनेस, राइट. सो आई थिंक सो दैट वाज अ मिस्टेक कि आई ओवर ऑप्टिमाइज ओवर। एग्जैक्ट। ओवर ऑप्टिमाइज ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जिसकी वजह से काफी सारा इशू आया. आई डोंट नो इशू आया अच्छा हुआ, आई कैन नॉट गो इन पास्ट एंड चेंज. बट दैट्स समथिंग व्हिच आई एम कॉन्शियसली अवॉइडिंग दिस टाइम. ऑल राइट। मतलब ये आपको अपनी मेजर मिस्टेक लगती है, अगर आप रुके रहते तो आई थिंक आपको लगता है कि आप बहुत उस पे उसी फील्ड में ग्रो कर जाते, बीट यस. रिसर्च और एनीथिंग। या ओके। लाइक एडटेक के टाइम पे ही अगर मेरे को लगता है कि मैं हम्म। उस टाइम रुका रहता, सो इट कुड हैव बीन अ ह्यूज बिजनेस एट दैट टाइम. बट एनीवे, it's okay. I don't know, probably that was for the good or bad, I don't know, I cannot change. But I'm consciously avoiding this time. I'm not overthinking, over optimizing. एग्जैक्ट। It's सो a little over optimization in this way. You always think इससे better क्या है. ओवर थिंक नहीं करना चाहिए ज्यादा, बैड हो I have, जाएगा। एग्जैक्टली। सो एट लास्ट जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जो स्टार्टअप्स वगैरह के फील्ड में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने हिसाब से, जो अभी कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में हैं? यार मेरा सिंपल सा एडवाइस है, डू समथिंग. स्टार्टअप कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी भी ने रूम में सोचा और चल आइडिया आया चल जाएगा. पीपल ट्राई मल्टीपल थिंग्स, पीपल डू मल्टीपल थिंग्स, एंड फिर चलता है, राइट. I think the best way to do startup is build expertise in one field. चाहे तुम ओपन सोर्स में बिल्ड कर लो, चाहे किसी भी चीज में एक यूनिक चीज में एक्सपर्टीज बिल्ड करो. एंड विद दैट एक्सपर्टीज, if you want to start or do something, build a project, try to build a project and launch it, get some customers. आपको प्रोडक्शन में तो लेके जाओ, हाँ। तब मजा आएगा. सब मजा। गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च करो, प्रोडक्शन पे लेके जाओ. और if you're not launching a mobile app, do something, get it to a production, try to build a team, try to make money, and try stuff. और अगर ये सब भी नहीं करना, join a very early startup. भले ही you are get joining them unpaid, join, ज्वाइन करो। कुछ और करो. मतलब बट जस्ट यू हैव टू इंश्योर जहाँ भी तुम ज्वाइन कर रहे हो तुम्हारे पास इनफ काम रहे. एंड नॉट जस्ट थिंक अबाउट टेक, think about how to get sales, how to get this product better, what are the एग्जैक्ट। customer pain points and stuff like that. Overall thinking develop karo. That's what I think is the my advice to college student. And the whole point is do something, whatever, kuch bhi karo. ऑल राइट। सो गाइज आई थिंक इस पॉडकास्ट सेशन में आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर होंगे। निवेदित ने हमें ऑलमोस्ट काफी चीजों के बारे में बताया, उनकी लाइफ लर्निंग्स के बारे में, कैसे स्टार्टअप पे काम करना चाहिए, क्या माइंडसेट रहना चाहिए, क्या उनकी थिंग्स है, सब उन्होंने अपने हिसाब से डिटेल में बताया। सो आई होप आज का पॉडकास्ट सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक्स निवेदित फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन, बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank you, Gaurav, and I hope it helps someone.
So if you don't mind, can I put your LinkedIn handle in description? Sure, you can. All right. So guys, that's it for today's video. Video अच्छी लगे definitely like share करना and I'll see you in the next video.